So shall we start? Yes, sir. Okay. So you'll get that order. I said that it 10 to the power 20, huh? And that factor also 4.1 into 10 to the power 20. But main is that power. Yes, sir. They will give different power. Okay, and they will ask order, and exactly this kind of question you will get. And when you will do this kind of question ना, please आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है जब इस तरह के कैलकुलेशन है। हर बार ऐसा नहीं कि 10 to the power 4 किसी का 10 to the power 16 है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, जब थोड़ा आपका कैलकुलेशन बड़ा है थोड़ा धीरे धीरे करो आप। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, सी पार्ट में मेरा 19 ठीक हुआ था, वहां पे मेरा जीआरएफ क्वालिफाई वहां पे हो गया है ना, बाकी तो आपका फिर कुछ नहीं था। चलो, Sir, we are allowed calculators or not? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मैं भी तो आपको करके दिखाया ना विदाउट कैलकुलेटर में ऑर्डर, है ना, कैसे आता है ना, थोड़ा पेशेंस लेके करोगे हो जाएगा, है ना। मैंने तो हाथों में दिखाया ना कैसे पावर आया है ना, तो ये थोड़ा गेस करके आपका ऑर्डर ही पूछा जाएगा। ओके, डिफरेंट ऑर्डर दिया रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है Sir, the exam is based on OMR sheet, ना? OMR सीट नहीं, और आपका ये है ना कंप्यूटर, आप तो ये हो गया ना, बेस्ड। हाँ कंप्यूटर बेस्ड हो गया ना सर। यस, बट आई डोंट नो, पहले कैलकुलेटर अलाउड नहीं था ना हम लोगों ने जब दिए, अभी तो नहीं पता मेरे को, है ना आप लोग। हाँ, बट शायद नहीं अलाउड है होगा इसमें नेट अभी पर। allowed है, सारे allowed। एग्जाम में अलाउड है। Allowed है। अलाउ है, तब तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कितना टफ था, है ना, बहुत अच्छा है। हाँ सर, जेआरएफ के लिए सी पार्ट कंपलसरी है क्या, मतलब? देखो, आपको अच्छा रैंक करने के लिए सी पार्ट अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है, और अगर क्वालिफाई करना है तो बी पार्ट को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेस्ट टूल है, तो मैं हमेशा 75 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, है ना, और मेरा एक्सपीरियंस है 4 बार क्वालिफाई करने का, 19, 20, 61 ऑन 9 रैंक। ठीक है, ग्रेट सर। नाउ विल डिस्कस ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है, so if you remember we have discussed yesterday the pair of mirror, okay, M1 and M2। ठीक है, then you have active medium, right, and let us assume that reflectivity of this mirror is R1 and this is R2। so ये क्या हो रहा है आपका, E2 है और E1 है। जब यहाँ से एटम, when atom is making transition from upper level to lower level, you will get a single frequency, right? Is not it? You will get a single frequency, right? Yes, sir. But you see, Yes, sir. this will go to this mirror, again it will come to this mirror after reflection, because this is almost fully reflecting. Again after from this mirror it will reflect, it will go there. So you see, electromagnetic wave is confined within the between the bounded medium. So this electromagnetic wave is confined between this bounded medium, or you can say that that electromagnetic wave is oscillating between these two mirrors. It will go here, again it will come back, again it will go, and when the electromagnetic wave is bounded by a medium, it will create what? According to electromagnetic theory, when according to electromagnetic theory, when electromagnetic wave is bounded by a medium, then it will produce what? It will produce what? Anyone? Standing waves. सर क्वेश्चन क्या था? अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाउंडेड मीडियम में कन्फाइंड है,
तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। When an electromagnetic wave confined between medium, it will create standing wave. And you know that standing wave can have different mode of vibration. Suppose आपके पास एक रोप है, ठीक है, आपके पास एक रोप है और आपका उसका जो दो एंड वो आपने वॉल में फिक्स कर दिया, and let us assume that length of this rope is d, so it can vibrate like, let us write it below the separation, so it can vibrate like this. This is first mode. Also, this rope can vibrate like this. Okay, same separation. In higher mode, this is first mode, second mode. In higher mode, it can vibrate like this. So when it is vibrating like this, how much will be the wavelength? Anyone? D by 2L. 2d by 1, right? Is it clear to all? ये कितना है? lambda by 2, right? Exactly equals to d. So you can say it because this is a lambda by 2, right? So lambda by 2 equals to d. Okay. So lambda equals to how much? 2d. 2d by 1 you can write also. Here, what will be the lambda? D. You can write 2d by 2, right? No. So for this, for say 2 modes, you can write lambda equals to 2d by 2. What I am right? So for first mode, you can write 2d by 1. For 2 modes, you can write 2d by 2. For mth mode, how much will be the wavelength? Lambda m? Exactly. Very good. 2d by m. So same thing is happening here also. The laser confined beam will have different vibration. So what does it mean? सर Yes. सर इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस ये सब नहीं होगा? हाँ, सारे स्टिमुलेटेड प्रोसेस में जो आपका लाइट बन रहा है वही मैं लिखा हूँ। आपको बहुत सारे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम विल गेट लार्ज नंबर ऑफ फोटोन हैविंग Yes, similar frequency, but they are confined in this two mirror, and when this electromagnetic wave confined, they will produce standing wave, and Oh, means standing wave can आफ्टर एमिशन का बात हो रहा है. ओके हाँ, emission के बाद एक confined है ना, so it will create standing wave. Standing wave can have different mode of vibration. Like suppose you have rope and you fix this rope, end of this rope is fixed by wall, so it will have different mode of vibration. So different mode of yes. लैम्बडा का फॉर्मूला एक बार बताएंगे मुझे? देखो ना, ये कितना है? ये lambda by 2 है ना? यस, lambda by 2 equals to how much? This length. डी. तो lambda by equals to lambda by 2 equals to d है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? lambda equals to 2d. यहाँ से देखो सर एल कहाँ से हाँ आना चाहिए ना इस एक्सप्रेशन में? एल क्या? आना चाहिए. लैम्बडा इज इक्वल टू 2d बाय एल लिखा है ना हमने यहाँ 2d बाय. हाँ, फॉर mth मोड, दिस इज फॉर mth मोड, तो m आया ना नीचे? एम नहीं सर, एल का बोल रही हूँ. 2d बाय एल लिखा है ना हमने लैम्बडा इज इक्वल टू. हाँ, फॉर mth मोड, जब ये मोड m है, आपको यही m लिखा है, इसमें कंफ्यूजन है आपका? नहीं समझ में आया. एल लेंथ है, लेंथ हमने बन किया थी. हाँ, फॉर 1 मोड के लिए है, 2 मोड के लिए. So similarly you get 3rd mode, 4th mode, है ना? But for laser you will get large number of mode. I'll prove that. But क्या ये है, इसका मैसेज क्या है? When that laser is confined between this bounded medium, you will get different wavelength, right? Is not it? Is it clear? यस सर. हाँ, तो पहले क्या था? देखो, पहले क्या था? लेजर लाइट जब कन्फाइंड हो रहा है, you are getting large number of photons, right? Large number of photons you are getting, that is actually required for high intensity. But problem क्या हो गया?
कि जब आपका लेजर लाइट कन्फाइंड हो गया तो फिर क्या हो गया, इसका डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बन रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बन रहा है. बट ऑफ कोर्स the mode corresponding to the frequency that is emitted here, the mode corresponding to the frequency that is produced here is highly dominant. मतलब क्या है, जब कॉन्फाइंड होगा ना तो आपको इस तरह की अभी मैं डिस्कस करूंगा. तो पहले आप ये लिख लो पहले, फिर मैं बताऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा आपको. तो फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा, एमएथ मोड का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, c by lambda, right, lambda m, right? Yes. So it will be mc by 2d, right? ठीक है. अगर आप मीडियम लोगो, सपोज दिस मीडियम वेव दैट लाइट इज propagating through a medium having refractive index n, then what you can write, अगर जो लाइट है आपका फोटोन से और लाइट है इस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, अगर इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, तो व्हाट विल बी द मॉडिफिकेशन हियर, सो फॉर C by mu. c by n, Mu. right? हाँ, or mu we can write. So what will be the expression, mc by 2nd, right, where n is the refractive index. सर ये गामा m लिखा है क्या, ये ये फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन C by frequency lambda. frequency of mth mode, frequency of ओके सर, ओके सर. frequency of mth mode is c by lambda m. The lambda is m is 2d by m. So if we substitute mc by 2d, or if that medium has a refractive index n, so c here you have to replace v, and v is nothing but c by n. So if we substitute here, we'll get mc by 2nd. Okay, this is for mth mode. So what is happening here? So suppose this wave, I'm writing that frequency is like this. Okay, frequency is nu naught. Okay, this frequency I'm writing, huh? So this is like this, but due to confinement, you will get many frequencies. Like, so of course, this side along x-axis you have frequency, and this is your intensity along y-axis. So the high the frequency corresponding to this emission or this photon is very high. The intensity corresponding to this photon will be very high. So this is nu naught. So this is like nu naught here. Then you will get extra modes also, or extra frequency that will be less Please show intense. this side, that सर is not बोर्ड के आउट visible. गया सर, आउट चला गया, बोर्ड के बाहर हो गया सर. अच्छा अच्छा, फिर इधर करना पड़ेगा. ठीक है, मैं इधर करता हूँ. तो कॉन्फाइन होने के कारण क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मिलेगा. ऑफ कोर्स कौन सा डोमिनेंट होगा और हाईली इंटेंस होगा, जो आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो आपका डोमिनेंट होगा. बट बिसाइड्स दैट यू विल गेट few frequency. So along ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब सर जो स्पॉन्टेनियस हाँ, इमिशन yes. कर रहा है वो वाला फ्रीक्वेंसी. हाँ एग्जैक्टली, हाँ. तो दिस इज योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट. ओके, सर हाँ, सर ये ओरिजिनल मतलब जो ये आपका वाला इनिशियली प्रोड्यूस हुआ था ना वो वाला. Yes, sir. हाँ ओके, और फिर बाद में डिक्रीज करते जाएगा. हाँ, ये आपका कुछ और फ्रीक्वेंसी भी मिलेगा, है ना. सो सपोज दिस इज योर न्यू ओके नॉट, सर. you will get extra frequency that I'll calculate that separation also. But along x-axis you have frequency, along y-axis you have intensity. But laser light के लिए क्या चाहिए आपको, ये unwanted, right? ये तो नहीं चाहिए आपको, सिंगल फ्रीक्वेंसी चाहिए, नहीं? यस सर. यस सर. तो Yes. ऑप्टिकल रेजोनेटर तो आपका इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपका एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है ना, यार एक्स्ट्रा मोड. तो ये एक्स्ट्रा वाला कहाँ से मिल रहा है सर? हाँ, ये आपका डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो है. स्टैंडिंग वेव्स की वजह से. एग्जैक्टली. तो फिर इसको ओह. क्या करते हैं, फिर इसमें ग्रेटिंग यूज करते हैं लेजर में, इसको रिमूव करने के लिए. ओके सर. ओके, और सर इनिशियल वाला इतना पीक पे क्यों चला जा रहा है सर? इनिशियल वाला इसीलिए पिक पे जा रहा है क्योंकि इसका ये डोमिनेंट है ना. ओह ओके हाँ, सर. ये डोमिनेंट है. सर हाँ, सर वेलोसिटी CYN कैसे हुआ यहाँ पे? अगर आप सपोज मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई मीडियम में चल रहा है, ये आपका सपोज मान लो मीडियम है, एक्टिव मीडियम में चल रहा है ना ये,
तो Yes, मीडियम का sir. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो फिर उसका स्पीड कितना हो जाता है, CN हो जाता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। Okay, sir. When light passes through a medium having refractive index n, then speed will be how much? CN, right? No? So Yes, sir. Yes, sir. basic formula. हाँ, so ये क्लियर है ना। तो रेजोनेटर में क्या Yes, sir. प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है तो इसलिए ग्रेटिंग को यूज करके इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। नाउ सेपरेशन बिटवीन टू मोड्स, टू सक्सेसिव मोड विल बी हाउ मच, और मोड सेपरेशन विल बी हाउ मच? You people are enjoying class? No? Yes, sir. We are enjoying. Enjoying, sir. Okay, thank you. Actually, I have many health issues, but you have exam. That's why I'm taking class. Mode No, separation sir. will be how, It's very good, sir. mode separation will be how much? Delta nu equals to nu of m plus 1 minus nu of m. Okay, so how much you will get? How much you will get? So you substitute m plus 1 here for nu m plus 1, then you substitute m here. So if you substitute it, you will definitely get Cy 2nd. Now can I give question? You will solve it? Yes, sir. Sir, Yes. सर मेरा ऐसा डाउट है सर कि इनिशियल स्टेज में पीक आ रहा है, तो सर इनिशियल स्टेज में वेव्स नहीं फॉर्म हो रहा है, स्टैंडिंग वेव्स। नहीं, स्टैंडिंग वेव तो सब में आपका प्रोड्यूस होगा ना, बट Yes, sir. ज्यादा नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा दिस इनिशियल के लिए, मतलब ऐसा एक मोड ओ प्रोड्यूस होगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मोड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी। ओ जिसको हाई पीक दे रहा है। हाँ, मतलब मोड्स तो यू विल गेट मेनी नंबर ऑफ मोड्स, बट मोड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी Will मच be हाई। high. हाँ, Okay, दैट्स हाउ sir. यू आर गेटिंग हाई इंटेंसिटी। Okay, sir. Clear now? But this Yes, sir. Yes, sir. this thing is very important for your exam purpose. Mode separation, the mode value corresponding to that central frequency. I'm giving question, you people do that answer because you are making that calculation mistake. So I'll not do that calculation, you do. Okay, I'll check. Jaldibazi nahi. Now suppose central frequency is given, nu naught is given. Nu naught is 5 into 10 to the power 14 hertz. Okay, and separation between mirrors is given, d is equals to 60 centimeter. Okay, n is given, refractive index is given on. Okay, so find the modes corresponding to that central frequency. Write that question. So this parameter is given, you can write example also. So central frequency is given, separation between mirrors is given, refractive index is given. Now they have asked, find the mode value corresponding to the central frequency, and also calculate mode separation. Can you able to do that? So corresponding to The corresponding mode to value corresponding to the central frequency. Okay. So 2 into 10 to the power 5. 2 into 10 to the power 5. 5 or 6? 5 हो रहा है। 5 आ रहा है, चेक करो, 5 भी आ रहा है सर। हेल्प करो। तो सेंटीमीटर है ना सर, ये सेंटीमीटर है डी सर। हाँ, सेंटीमीटर है। Any more answer? Sir, 2 into 10 to the power 6. गुड, वेरी गुड। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस लेके कैलकुलेशन करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पज के लिए, मेनली आपका पेशेंस ही चेक किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। क्या आंसर आ रहा है? मोड वैल्यू विल बी 2 into 10 की पावर 6। ओके, यस सर। हाँ, ये very सर good. 6 ही आ रहा है सर। वेरी तो गुड। मैंने 60 को 6 लिख दिया। हाँ, तो इट विल बी mcy
2d because n is given your on. So from here you can write m equals to 2 nu naught dy c, right? 2 nu naught dy c, right? Now you can substitute it. Is it clear? So 2 into 5 into 10 to the power 14, right? 5 into 10 to the power 14. Then you will have d. D is how much? 60 into 10 to the power minus 2, right? In SI unit, in semi they have given 60, so it will be minus 2. Then you will have C is 3 into 10 to the power 8. Okay. So if you calculate it, you will get 2 into 10 to the power 6. Okay. So then mode separation will be how much? 2.5 into 10 2.5 raised into to 10 8. to power 8. 8. 2.5 into 10 गुड, raised to 8. वेरी गुड. सबका आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. करने का जरूरत है, किसका नहीं आ रहा है? अगर हो गया सबका तो फिर मैं आगे जाऊँ. सबका आ रहा है? Sir, I'm having doubt. You have a doubt? Okay. So then I can do, right? I have to do, let me do. So second part is frequency, the separation delta nu will be how much? Or that will be Cy 2d, right? Mode separation C by 2d, right? Here Yes. you can see C by 2nd, n is 1 given. So C is given 3 into 10 to the power 8 divided by 2 into 60 into 10 to the power minus 2, right? So if you calculate it, you will get 2.5 into 10 to the power 8 hertz. Okay. Let us do one more problem because this we'll do one more problem. सर पहला जो था ना वैसे कैलकुलेट मोड सेपरेशन हमें निकालना था ना, Mode separation तो सर उसका यूनिट हर्ट्स कैसे मतलब आ जाएगा? नहीं आएगा. ये आपका मोड सेपरेशन मतलब फ्रीक्वेंसी तो है ना. हाँ, तो पहले का भी हर्ट्स से आएगा ना? पहले का मोड वैल्यू वो नंबर है m. हाँ सर वही. हाँ वो वैल्यू है मोड, नंबर ऑफ मोड. ओके. और यहाँ पे सेपरेशन देखो ना, ये डेल्टा न्यू. न्यू क्या है, इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज ही तो है. हाँ, बेसिक थ्योरी ना 12th क्लास का. इसका यूनिट सर. अगर हर्ट्ज होगा, इसका हर्ट्ज होना ही पड़ेगा, है ना. और लेफ्ट हैंड से ये भी हर्ट्ज ही होना पड़ेगा, है ना. ओके, लेट मी डू वन मोर प्रॉब्लम. Okay, then we'll proceed for cavity lifetime. Okay, consider a light beam. Consider a light beam of central frequency nu naught equals to 6 into nu naught equals to 6 into 10 to the power 14 hertz. So central frequency Nu naught equals to 6 into 10 to the power 14 hertz. So Is 14 in to 40. 14 on 4. And sorry, the central frequency nu naught equals to 6 into 10 to the power 14 hertz is incident normally on a resonator. Is incident normally on a resonator with n naught equals to 1 and d equals to 10 semi. Okay. Incident normally on a resonator with n naught, that or n equals to, you can write n, refractive index is on, separation is 10 centimeter. Then find on mode separation to mode value corresponding to that central frequency. So find mode separation to mode value corresponding to that central frequency. 3, if R means reflectivity is
0.95, if R is 0.95 and power inside the resonator is 20 milliwatt. Power inside the resonator is 20 milliwatt. Then calculate the output power. तो पहला दो तो सिमिलर है, थर्ड वाला करना पड़ेगा. कैन यू एबल टू डू? क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. So can you able to do now? क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Okay. Now you can do right one by one. So first two are same. The mode separation delta nu will be C by 2D. C is given 3 into 10 to power, sorry, C is known 3 into 10 to power 8. 2 into D. D is given 10 into 10 to power minus 2, right? From centimeter to meter. Okay. So how much you will get? 1.5 into 10 to 1.5. 9, right? yes, sir. 10 to the power 9 hertz. Then mode value nu naught 2d by C, right? Yes, sir. How much you will get? 4 into 10 to the power 5. Very good. 4 into 10 to the power 5. Okay. Next is output power. ये सबका आ रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next is output power. Yes, sir. So P out third. Yes, sir. P out will be how much? Input power into on minus R. अगर दो मिरर गिवन है, एक मिरर का रिफ्लेक्टिविटी गिवन है, का दो मिरर का होता तो फिर क्या यूज करते हैं हम? P in into on minus R on into R2. यहाँ पे एक मिरर का गिवन है तो हम एक मिरर का यूज करेंगे. तो यूज करो. आपका कितना गिवन है? ये 20 मिलीवाट गिवन है, 1 minus 0.95. Okay, milliwatt. Sorry, m should be small here. So ठीक 1 है. milliwatt. Good. हाँ, सर आपने 2 मिनट के लिए 1 माइनस R प्लस R2 R1 प्लस R2 बोला था ना? अगर सपोज मान लो हाँ दो मिरर है, दो मिरर का रिफ्लेक्टिविटी गिवन है R1 R2, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? R की जगह पे R1 R2 यूज करेंगे. तो यहाँ पे एक मिरर का गिवन है तो इसलिए R यूज करता हूँ. ठीक है. कितना आएगा? 1 मिलीवाट, राइट? सबका आ रहा है? सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पी आउट पी इन, मतलब पावर का रेशियो वगैरह ऐसा कुछ किया क्या? नहीं, पावर का रेशियो नहीं. देखो, अगर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होगा तो फिर कितना आया जाएगा? आउटपुट पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो लॉस हो रहा है ड्यू टू पार्शियल रिफ्लेक्टिंग ऑफ दिस मिरर, है ना? Yes, sir. नहीं हाँ, सर समझा. नहीं समझे ना? देखो, यहाँ एक मिरर को पार्शियली रिफ्लेक्टिंग रखते हैं ना. क्यों? क्योंकि आपको लेजर में आउटपुट चाहिए ना. वो हाँ, आउटपुट ये है. अगर यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होता तो फिर कितना होता? आर की वैल्यू ऑन होता. आर की वैल्यू ऑन होती कि नहीं? तो उस टाइम आपको कुछ आउटपुट मिलता? नहीं मिलता ना. यस सर. हाँ, आउटपुट नहीं मिलता उस टाइम. ठीक है. तो ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक लॉजिक से भी कर सकते हो, है ना? ठीक है. तो 9:05. Can we do? It will take 30 minutes. Okay, let us do tomorrow. It will cavity lifetime. It will take 30 minutes. It is not able to finish. So shall Sir, we? can you explain Yes, sir. how power will be 0? Huh?
power will be 0. Output power. Output power will be 0. If it is fully reflecting, then R will be how much? R will be on, right? On. Yes. So if R is on minus 1 will be how much? 0. Fully reflect, but in laser you should have some partial reflecting, because at the end you have to get some output, right? No, that's why Yeah. this mirror, although it is highly reflecting, but it has a reflectivity around 98%. Okay, because यहाँ पे हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, बट आउटपुट तो आपको कुछ मिलना चाहिए ना, जो मिल रहा है वही है ना? हाँ सर, इसीलिए सेटअप में हमने 100%, 95% ऐसे लिया था। एग्जैक्टली। ओके, हाँ, ठीक है। तो shall I do the tomorrow cavity lifetime? Yes, sir. Okay. Okay, we'll do cavity lifetime, then we'll go for because cavity lifetime is also important for your net exam. Okay, then we'll go ruby laser and helium neon laser. Okay, so we should stop here. हाँ सर मेरा एक डाउट हाँ सर, बोलो। ये A21 by B21 into U जो फॉर्मूला है उसमें सर A21 by B21 का रेशियो में तो U भी है, तो सर हम रेशियो बोल रहे हैं A21 by B21, बट उसमें है U भी है। यूनिव भी इसीलिए हो रहा है ना, देखो। हाँ, वेरी गुड वही क्वेश्चन। पूछ रही थी सर, मैं वही पूछ रही हाँ, थी। वेरी गुड क्वेश्चन, because you see rate of stimulated emission is depends upon what? A21 sorry, rate of spontaneous emission, A21 N2, no? Yes sir. And rate of stimulated emission is how much? B21 U nu N2. This N2 will be cancelled. Yes. That's why you are getting this. Oh. Is it clear now? Okay. Is it clear now? Then B21 depends on U of nu. Not B21 depends upon U of nu. Actually, stimulated emission is depends upon U of nu. Yesterday we have discussed, right? No? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now I think you got your answer, right? Yes sir. Okay. So shall I stop now? Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, Good sir. night. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir.